Good morning, students. Happy New Year to all of you. Welcome once again for my session. I'm going to teach you chapter number 6, Accounting for Special Transactions, in which we have Unit 1, Bill of Exchange and Promissory Notes. Friends, in this chapter, we are going to start first with journal entries, Bill of Exchange topic. Very easy topic, beta. So, let's start with basic session of accounting for special transaction. Chale. So let's start. Before starting any session, first we will revise traditional approach and modern approach. So accounting, all journal entries are divided in two parts. One is either you go by traditional approach. For this chapter, we are going to see traditional approach and not modern approach. So traditional and modern. Traditional approach, we have three rules of accounts: personal, real, nominal. This is a quick revision. Personal account talks about due relationship and receiving giving relationship. Due relationship, debit the debtor, credit the creditor, and debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver and creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out, and nominal account is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Modern approach is divided in 5 parts: asset, liability, expenses, income, and capital. Asset shows debit balance, liability shows credit balance, expenses shows debit balance, income shows credit balance, and capital shows credit balance. Before starting today's session, can you tell me some entries regarding credit sales? Yes, let's see how many of you can answer it. Credit sales entry beta, just we are going to revise. थोड़ा सा पिछला रिवीजन करते हैं. Okay, so how many of you are aware of this? Yes, beta, very good. So Sindhu ji from SRO, she wrote all basic rules of accounts. Pramod, good morning, sir. I miss you a lot. Happy New Year and welcome back, sir. Love, respect always. Thank you, beta. Yes, Aishama, good morning, beta. Aryan, good morning and welcome back. Bol raha hai. Yes, good morning, beta. Ritu, Dimple, Yashraj ji, Manish Jain, Anaya, beta, good morning. Chalo, chalo, jaldi. Yes, Ankita, thank you, beta. चलो, so एंट्री बाय महिमा जैन सबसे तेज जिसने बताया. महिमा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. वेरी गुड बेटा महिमा. डेटर्स टू सेल्स एंट्री. डेटर्स टू सेल्स. Debtors to sales entry. Yes, very good. So for bill of exchange, entry is debtors to sales. I'm giving you 5 entries. Let's see how many of you can answer it. First one, credit purchases. Credit purchases. First entry, credit purchase. Second entry, credit sales. Sales, credit sales already you answered. Third one, payment to creditors. Fourth one, receipt from debtors. And fifth one, discount received
and sixth one discount allowed. चलो देखते हैं कितने लोग आंसर दे रहे हैं. I want all these 6 entries बेटा फटाफट. बेटा लाइन से 6 एंट्रीज लिख दीजिए. You have to write all these 6 entries in one answer. Beta, this is in rough pages. Don't write it in fair. I will tell you to write all these concepts. Debtors to sales. First entry is purchases to creditors. First entry, purchases to creditors. Chalo, let's check the answer. Purchases to creditors, very good beta. Pritesh Sutar, very good. Debtors to sales is the second answer. Third answer, beta, creditors is due relationship here and sales may be due relationship. When you make payment, yes, creditors को debit देना है, creditor becomes receiver
to cash or bank and received from debtors. So cash comes in. So bank or cash account debit to debtors. Debtors becomes giver. Discount received, it's our gain. So to discount received. And who is giving us discount? To whom you are going to pay. So creditors को debit आएगा. किसको debit आएगा? Creditors को debit आएगा. And discount allowed is your loss. And when someone makes you payment, that is debtor. So here the entry will be discount allowed to debtors. So how many of you answered it correctly, beta? Let's see. Cash to discount allowed, wrong, beta. Creditors to discount received is correct. Pritesh, last वाले एंट्री में गड़बड़ कर दिया बेटा आपने. Very good. Yes. Many of you answered it correctly. If you are not getting any logic behind it, please understand. क्रेडिटर्स को क्रेडिट बैलेंस होता है. वंस इन हिंदी, क्रेडिटर्स को क्रेडिट बैलेंस होता है. तो जब भी हम परचेस करते हैं उधारी पे तो क्रेडिटर्स आता है, और जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर्स को डेबिट देना है. सो क्रेडिटर्स अकाउंट आपका कैसे दिखता है? क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बाय परचेसेस and to cash. If you can visualize these ledgers, then your accounting will be very easy. So this is a quick revision of your previous chapter, debtors, ledger account and journal entries. Debtors का pro forma कैसे होगा? Debtors का pro forma, yes, who is debit बेटा? Debit plus and credit minus. So बेटा debit से शुरू करेंगे. When debtors arises बेटा, debtors का picture में आएगा to sales, and when you pay, collect cash. So by cash or by discount allowed. Okay, so today we are going to see not received, this is discount allowed, and creditors को हम लोग discount received करेंगे. Okay, so please improve your basics. Many students always ask me, sir, how to improve basics? So basics मतलब रोज खुद को entries पूछना है. What is the entry for bad debts? And you have to answer it. ठीक है, अभी next sessions में daily 5 to 7 minutes we will revise previous chapters. Okay, so daily 5 to 7 minutes में I will ask you some entries and think logically. बेटा please apply rules of accounts. अभी मुझे पता है थोड़ा gap हुआ है मेरे sessions में, तो आप थोड़ा सा भूल गए रहेंगे क्योंकि आज में BRS चालू हुआ, inventory चालू हुआ. So in which basics of accounts are not required, but now once again we are starting with basics of accounts. So BRS में कैसा है, बेसिक्स की जरूरत नहीं है. लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच और ये कैश बुक पासबुक सिंपल है. इन्वेंटरी वैल्यूएशन, हाउ टू डू इन्वेंटरी, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन बाय व्हिच मेथड. सो हिस्टोरिकल, नॉन हिस्टोरिकल, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट. डेप्रिसिएशन में वी विल नीड दैट एंट्रीज, आइदर डेप्रिसिएशन टू एसेट और डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. बट फॉर 6th chapter now again basics are very important for application of your बेटा ऑल ट्रेडिशनल अप्रोचेस. ओके, सो ट्रेडिशनल अप्रोच को अप्लाई करना बहुत जरूरी है. यस, वेरी गुड बेटा मुकेश. यस, सो चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ वंस अगेन. ओके, सो डेली 5 मिनट्स का रिवीजन होगा. एंड टुडे वी नीड ऑल दीज एंट्रीज फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज. टुडे वी नीड ऑल दीज एंट्रीज. Should I tell you entries directly or whether I will give you 5 seconds for thinking? Yes, you want to develop your thinking, beta. Please answer it. Okay, so should I tell you entries directly and ask you in the next session, or you have to think whether you want some time for thinking, beta? Tell me it in comment section. चलो जल्दी से बताओ. Okay, चलो, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. सर बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या? फाइव सेकंड्स फॉर थिंकिंग. ओके ओके, सो 5 seconds फॉर एवरी एंट्री. हाँ, फटाफट चलो. So first I will give you introduction about bill of exchange. See beta, in past when you do not have money, so I asked my beta father-in-law, he had Asian Paints
एजेंसी. ओके, सो एशियन पेंट की एजेंसी उनके पास. तो आई आस्क हिम कि व्हेन, जब माल जो होता था, दैट मटेरियल, व्हेन इट comes to your place, okay, and if you do not have money, how in real life in 90s I'm telling you, हाँ, so 90s में आप पेमेंट कैसे करते थे, how you are making payment if payment is not available, because what happens, manufacturer manufacturer sends goods to that dealer, and dealer has to pay certain amount, assume 20%, 30% of total amount. Suppose example दे रहा हूं, suppose the cost of the material is rupees 1 lakh, and 1 lakh का 30% he paid it in advance, and remaining 70,000. Now beta, at that time money problem होता था, so what happened कि dealer will first sell those goods. Okay, बिग शॉट होंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डीलर हैज टू फर्स्ट सेल दैट गुड्स, एंड डीलर विल टेक सम टाइम टू मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज 70,000. बट डीलर is giving in something in promise. So 70,000 he is paying after 1 month. 70,000 he is paying after 1 month. Now manufacturer assume he is in Delhi. Okay. और वहां पे फोन भी चलते थे, सिर्फ मोबाइल नहीं, 90s का जमाना है. ओके, फोन भी वो वाले, मोबाइल नहीं थे. तो दिल्ली में डीलर बैठा हुआ है. ओके, ट्रांसपोर्टर इज ओनली द वे, एंड देयर इज नो गूगल पे कि सडनली मनी ट्रांसफर हुआ, नो गूगल पे. सो दिल्ली मैन्युफैक्चरर ही वांट्स मनी, एंड डीलर इज इन महाराष्ट्र. डीलर इज इन महाराष्ट्र. सो नाउ हाउ टू मेक द पेमेंट? So normally is giving check, but check will all again take a time almost 10 to 15 days to clear. So after 30 days, that dealer is transferring that amount to the transporter. Okay, so transporter ko amount deta tha in 90s. Okay, and transporter will give that money back to Delhi manufacturer. So ऐसी chain होती थी. And for 1 month credit, dealer is giving in writing that I will pay you after 1 month, and that writing note is also with transporter, which is called as hundi, So beta, first understand. So in 90s 2000 बेटा, जुबान को ज्यादा आप लोगों को भरोसा रहता था. ओके, सो वर्बली and in writing that letter counts. Okay, so हुंडी जो होता था, that एक वचन बोलते थे, वचन चिट्ठी बोल सकते हो आप, कि भाई हम लोग आपको वचन देते हैं कि we will pay you after 1 month. Okay, so that is called as hundi in 90s. Now after that beta, now importer exporter. Okay, importer की बैंक will give exporter के बैंक को, तो वहां पे some writing में credit note. तो ये आप रियल लाइफ में जाओगे, व्हेन आई गो टू बैंक ऑडिट, तो आपको ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज नॉट इन एक्चुअल टर्म्स में आपको मिलता है. सो इन इंटरमीडिएट आई विल टेल यू इंपोर्टर कैसे वर्किंग देता है, एक्सपोर्टर कैसे देता है. सो दैट इज स्टिल इन राइटिंग, विच इज कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, सो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव. So when this bill of exchange comes, beta, when you purchase something on credit terms, okay, so suppose there is Sanket sir who is a seller, and assume Mahima is a buyer. Okay, Mahima is a buyer. Now Sanket sir sold some goods to Mahima, and Mahima wants to make a payment after 3 months. Okay, after 3 months Mahima wants to make a payment, but Mahima asked Sanket sir, please give me time of 3 months. Okay, so Sanket sir orders Mahima to give it in writing. Okay, so order is given by Sanket sir to Mahima, pay me और ऑन बिहाफ ऑफ मी, मुझे पेमेंट कर या मेरे बिहाफ पे किसी को पेमेंट कर. फॉर एग्जाम्पल मोना मैम को पे कर, मोना मैम बेटा वाइफ, तो उसको पे कर. तो ये मैंने उसको बोला, सो शी इज एंडोर्सी. सो यहाँ पे मोना मैम क्या हो जाएगी, एंडोर्सी हो जाएगी. सो संकेत सर इज गिविंग ऑर्डर टू महिमा, प्लीज मेक पेमेंट आफ्टर 3 months. नो प्लीज वर्ड, गिव पेमेंट आफ्टर 3 months. इट इज नॉट बेटा
प्लीज नहीं बोलेंगे, इट्स नॉट प्रॉमिस, इट्स एन ऑर्डर. सो ऑर्डर जो रहेगा, सो ऑर्डर इज कॉल्ड एज, इन अकाउंटिंग लैंग्वेज वी हैव टू, लॉ लैंग्वेज में टू डिफरेंट मीनिंग्स. इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, व्हेन संकेत सर ऑर्डर्स, when SS orders Mahima, so it is called as bill of exchange. So there is a one technical difference. Okay, and promissory note is when Mahima gives promise, sir, I will make a payment after 3 months. So when Sanket sir orders, it's a bill of exchange, and when Mahima promises, it is promissory note. Okay, accounting term wise there is no difference, entries are same in the books of SS and in the books of Mahima, whether it is bill of exchange or whether it is promissory note. But there is one line difference in law language. If Mahima makes a payment, in and Sankets are orders, okay, Sankets are orders, then it is bill of exchange. And if promissory note में क्या होगा, in promissory note, if promises by Sanket sir to, sorry, Mahima, promises by Mahima to Sanket sir, it is called as promissory note. So you got the difference. So whether there is any difference in bill of exchange? Yes, beta. Yes, tell me, difference is as per accounting wise or as per law? चलो जल्दी से बताओ. What is the difference? Yes, write it in comment section. जितना लिखोगे उतना सीखोगे. Okay, so लिखना है तो आपको याद रहेगा. Okay, everyone write it in comment section. Otherwise, chances of beta you may forget all these things. No beta, please don't write. Don't write. In accounting no difference. Very good, Pritesh. एंड महिमा बोल रही है सर लॉ के हिसाब से डिफरेंस है. सो व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर. ओके, एंड प्रॉमिसरी नोट इज, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑर्डर, एंड प्रॉमिसरी नोट, बेटा प्रॉमिसरी नोट, हु इज ऑर्डरिंग बेटा? सेलर और बायर. And who promises? Write down. Order by to whom? By whom? And promises by to whom? By whom? Chalo, write down. Order by SS. Yes, very good, beta Ritu. It is bill of exchange. And writing note by Mahima. Very good, beta Ritu. Very good. Everyone write it. Write it down, beta. And please try to attend sessions in live only. I know now your 12th exams are near, or it might happen that your FY, SY exams are there. But beta, please try to attend maximum sessions in live one. Very good, very good. Chalo. So when you are taking time to make a payment, so everyone will either promises or orders. Okay, and if it is order, it is bill of exchange. And if it is a promise, order is by always seller to buyer, and promise is always by buyer to seller. And that is the difference between bill of exchange and promissory note. Very good, beta. Chalo. So goods are sold on credit. Let's understand. Very good. Everyone answered it. Goods are sold on credit. Purchaser should give, purchaser means Mahima should give a written promise to pay on certain date. That date is very important. In commercial practice, these written promises are valuable instrument. Better that bill of exchange. Yes, you have 4 options for that bill of exchange. It has value. That writing, ये ऐसे writing में देना बेटा, culture in 90s was very different.
ओके, अभी हम लोगों की नीयत बदलने लगी है. बट इन 90s दैट रिटर्न प्रॉमिस वाज ऑफ वेरी, यस बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोलते थे उसको कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ओके, फॉर यूर डे टू डे ट्रांजैक्शन. तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता था. इन कमर्शियल प्रैक्टिस दिस रिटर्न प्रोमिसेस आर वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इंपॉर्टेंट वन ऑन क्रेडिट, which implies that buyer will give his payment and seller will receive his payment. तो वहां पे बेटा जुबान पे अपने दादाजी के टाइम पे ये जुबान पगड़ी देना और ये सब चीजें आपने देखी रहेगी मूवीज में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे वहां पे. टर्म्स को, ये वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंस रहता था. तो विच इंप्लाइज दैट बायर discharges his debt and seller receives payment. Why? Because return promises are accepted by bank. Okay, so that promises, even it is taken by bank, and by bank may give you better. Now what happens, that seller, I will tell you it in simple language. क्या होता था, seller जो होता था, now that seller, हाँ, he visits bank today itself. So payment is after 3 months, that 1 lakh rupees or 70,000 rupees. But beta, what now seller Sanket sir needs money. So he will visit bank and bank will give 69,000 rupees and bank income will be 1,000 rupees. Okay. So bank charges some discount and gives payment immediately. Now Mahima will pay to bank. Okay. Mahima will pay to bank after 3 months. So bank will get income of rupees 1,000. So बेटा क्या होता था, बैंक जो है ना, हम संकेत सर क्या करेंगे, संकेत सर जाके बैंक को विजिट करेंगे कि बैंक मुझे पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है आज सर, 3 महीने के बाद पेमेंट आने वाला है महिमा से. तो बैंक के पास ये एक चिट्ठी रहती थी. बैंक बोलेगा ठीक है, हमें भरोसा है संकेत सर, महिमा ऐसे ट्रांजेक्शन पेमेंट करती है, तो महिमा आपको कितना रुपया देगी, महिमा 70,000 बैंक को देगी, पर संकेत सर को कितना पैसा मिलेगा, 69,000. अरे संकेत सर को पैसा मिला ना आज यूज करने को, संकेत सर को आज 3 महीने के लिए पैसा मिल गया, बैंक से पैसा मिल गया. तो ये एक फायदा होता था बिल ऑफ एक्सचेंज का. तो बिल ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना याद रखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टुडे आई वोंट गिव यू ब्रेक, चलेगा आपको, 2 घंटे हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई करेंगे. चलो, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज देखते हैं. Okay, now let's understand these terms. Do one thing, बेटा, राइट इट इन योर थ्योरी बुक टुडे. ओके, थ्योरी बुक 100 पेजेस की जो मेंटेन की थी, हाँ, राइट इट इन दैट बुक. फर्स्ट टॉपिक नेम अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस. Okay, accounting for special transaction, and write down over in comment section after writing types of bills. So very good. I know every one of you is taking it very seriously. Accounting for special transaction is not very easy
chapter. In that we have 4-5 units. So every one of you, bill of exchange है, consignment है, goods sent on approval basis है, average due date, account current. So please take it seriously. This chapter, next 8 to 10 sessions, beta, very important one. बेटा आई एम गिविंग यू ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंकुर वर्मा, तो आप प्लीज, मैं तो प्रोवाइड करूंगा ही ये सभी नोट्स, तो आप सिर्फ लिखने का काम कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. दिस इज इन 100 पेजेस नोटबुक. I already told you to write it in 100 pages notebook, and 400 pages we are going to write some examples. Okay, answers. Chalo jaldi jaldi complete it. Over. Very good, Ayushi. So what is the difference? Bill of exchange is order and promissory note is promise. Okay, चलो स्टार्ट. ओवर बोल दिया. यस, वेरी गुड. बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा, इट इज इन राइटिंग. सी द डिफरेंस. इट इज इन राइटिंग. इट मस्ट बी डेटेड. सो ऑन दैट यू मस्ट हैव सम डेट. ओके, सो डेट मेंशन करना जरूरी है. ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी. वेरी गुड. promises to pay अनकंडीशनल. सो यू कैनॉट पुट एनी कंडीशन. तो एक ध्यान में रखो कि आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में आप कोई कंडीशन नहीं रहनी चाहिए कि हाँ मेरी शादी हुई तो ही पेमेंट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं. उसको ये हुआ तो ही पेमेंट करना है, नहीं नहीं भाई, कंडीशन कुछ नहीं रखना है. ओके, द मनी मस्ट बी पेएबल टू अ डेफिनेट पर्सन और इन हिज ऑर्डर टू द बेयरर. तो आपको एक सर्टन पर्सन को ये पैसा देना है, टू द डेफिनेट पर्सन or bearer of that instrument. So it's like, bearer check. So you can transfer it to any person. It might be bearer bill of exchange. The draft must be accepted for payment by the party to whom the order is made. It must be stamped. And payment must be legal currency of the country. Beta, now it's very difficult to you that you will get the bill of exchange to see it in the real life. But where you will get in case of import export. Okay, so that German, suppose if you are importing something from Germany, so German bank, Deutsche Bank and Indian bank, okay, so there might be some transactions जिसको हम लोग not exactly bill of exchange बोलते. In real life I will tell you it in the intermediate. So see, remember, so this normally you can see these transactions in import export. Okay, a check of bill of exchange, but this is very important. A check is bill of exchange, but every bill of exchange is not a check. So some important points. Promissory note, it's a promise, same thing, and it's signed by maker. Drawer, drawee, I tell you now, to pay a certain sum of money only to the order or certain person. Bearer not allowed, no acceptance is required. Okay, so yes, आप देख सकते हो इसमें slide में भी. Written document is promissory note or bill of exchange. So what is the difference? Bill of exchange is order, seller to buyer, and promissory note is promise by buyer to seller. Now understand the parties in it. So parties हम लोग देखते हैं of bill of exchange. Now let's try to understand what are parties of bill of exchange. Okay, parties. Now in my case, drawer. Okay, so drawer bill of exchange में drawer होता है in case of order. Okay, so कैसे याद रखने का? संकेत सर सेलर, महिमा buyer. Now order होगा, order by SS to महिमा. It is called as bill of exchange. It is called as bill of exchange.
So SS means sailor. He draws bill. So he is called as drawer. Okay. So he is called as drawer. Who draws bill? Okay. Drawer means who draws bill. And Mahima, on whom bill is drawn. Mahima is acceptor of this bill. महिमा एक्सेप्ट करेगी बिल, ऑर्डर देगा संकेत सर, महिमा एक्सेप्ट्स बिल, सो महिमा इज कॉल्ड एज ड्रॉवी. ओके, महिमा इज कॉल्ड एज ड्रॉवी, सो महिमा एक्सेप्टर. सो ड्रॉवर मीन्स हु ड्रॉज बिल, एंड जो बिल निकालेगा वो ड्रॉवर, एंड महिमा एक्सेप्टर. एंड सपोज संकेत सर ट्रांसफर इट टू मोना मैम that bill. Ki Mona ma'am, please take money from Mahima after 3 months. So Mona ma'am is called as endorsee, to whom bill is transferred by Sanket sir. Okay, Mahima accepts it, return it to Sanket sir, and then Mona ma'am is a endorsee. So Mona ma'am will, yes, it is transferred by Sanket sir to Mona ma'am. So Mona ma'am is endorsee. Chalo. Drawer means who makes the order. Okay, drawee is called as acceptor, drawee. And payee means जिसको बिल ट्रांसफर किया, पेई कि जिसको पेमेंट मिलने वाला है, टू हुम अमाउंट इज पेड, इन आवर केस मोना मैम. सो अंडरस्टूड व्हाट इज एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट मीन्स बिल इज ट्रांसफर्ड. चलो, नाउ in case of promissory note, so tell me who promises in comment section. कौन किसको promise करता है promissory note में? Yes, promissory note. promissory note कौन किसको देता है? चलो जल्दी से tell me it in comment section. चलो fast. Who promises बेटा? चलो जल्दी से, don't give up, fast answer it. 35 minutes हुए सिर्फ, you have to sit only for 2 hours. अभी 2 घंटे बैठना जरूरी है. बायर टू सेलर, अंश वर्मा. प्रॉमिसरी नोट कौन किसको भेजता है? सेलर टू बायर होता है क्या? क्यों गलत आंसर दे रहा है बेटा? सीए करना है ना हमें, एक ही इसमें समझ में आना चाहिए. अभी ऑलमोस्ट 5 टॉपिक्स आर ओवर. अभी आपका स्पीड भी बढ़ना चाहिए और आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी. नाउ डेली स्केड्यूल होना चाहिए आपका 8 to 10 आवर्स का. यस, प्रॉमिसरी नोट, बायर टू सेलर. ओके, सो प्रोमिसेस बाय महिमा. सो महिमा इज कॉल्ड एज, प्रोमिसेस कौन कर रहा है? महिमा इज कॉल्ड एज प्रोमिसोर. एंड संकेत सर को प्रॉमिस किया गया, सो प्रॉमिसी. संकेत सर इज प्रॉमिसी, रिमेंबर. सो जो प्रॉमिस करेगा, महिमा प्रॉमिस करेगी. जो बिल निकालेगा, ड्रॉवर. बिल एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉई. तो इधर संकेत सर ईआर है. ओके, एंड डबल ई महिमा है. इधर उल्टा, महिमा प्रॉमिस कर रही है, जो प्रॉमिस करेगा वो प्रॉमिसोर, जो बिल निकालेगा वो ड्रॉवर. ओके, उल्टा होता है इधर. एंड जिसके ऊपर प्रॉमिस किया गया है, जिसको प्रॉमिस किया गया है, ही इज प्रॉमिसी. तो इधर प्रॉमिसोर इज महिमा एंड संकेत सर इज प्रॉमिसी. सो यू गॉट द डिफरेंस. चलो, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन. इन बिल ऑफ exchange, bill accepted by Mahima. So she is drawer or she is drawee. Okay, in bill of exchange. So bill of exchange में 3 parties है, drawer, drawee and endorsee. So tell me it in comment section. Who accepts bill? Drawee or drawer? Who accepts bill? Richa, very good beta. A weightage Sindhu is not there in CA exams. Huh?
रिमेंबर सीए एग्जाम्स में नो वेटेज, सभी को इक्वल वेटेज है, क्योंकि आप ऑप्शन में कुछ मत छोड़िए, वेटेज आप बाद में स्कैनर में से देख लीजिए। सो मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करो। यस, ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट वंस यू अंडरस्टूड द बेसिक्स। चलो, वेरी गुड, ऑल आर आंसर्ड इट। ड्रॉवी, यस, Drawi accepts bill, and in our example Dimple is answering Mahima is a Drawi, sir, she is acceptor. Very good. uh Now tell me, the person who promises, the person who promises, okay, is called as promisor or promisee. Okay, so write down in the comment section, promisor or promisee. So Drawi is the correct answer, who accepts bill. Now I want answer. Yes, beta Kavya, your answers are visible to me. Very good. All students answered it. Sindhu answered it wrongly. Sindhu क्या कर रही है यार? Sindhu answered drawer. अकेली student. Only one student who answered it wrong. Drawi is a person who accepts bill na beta. Sindhu. Who promises beta? Tell me it in comment section. Who promises is called as promisor or promisee. मनीष जैन बेटा, जो प्रॉमिस करेगा वो प्रॉमिसर हुआ ना महिमा, प्रॉमिसी कैसे होगा? इसीलिए आंसर देना जरूरी है, प्रॉमिसर। यस, दोज हु आंसर प्रॉमिसी ऑल आर रॉन्ग, प्रॉमिसर। यस, वेरी गुड। जो प्रॉमिस करेगा ही इज अ प्रॉमिसर, मतलब महिमा इज अ प्रॉमिसर, and to whom promise is made is called as promisee. चलो, very good, very good. Mahima is a promisor. Ritu, very good. चलो, now what is endorsement? Endorsement means I am transferring that bill to Mona ma'am. So Mona ma'am is called as this transfer of bill is called as pass on this bill to another person. It's called as endorsement. Endorsement means transfer. Endorsement means transfer. Remember this word. Okay. So in your notes, beta, write down drawer, drawer, acceptor oblique drawee, and payee or endorsee. Payee oblique endorsee. So drawer तो बराबर है, and write down over in comment section. So parties of bill of exchange, write down fast. Drawer, payee oblique endorsee. अंकुर, क्वेश्चंस आपके विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स दे रहे हैं, इसलिए आपके आंसर क्वेश्चंस पढ़ना थोड़ा मुश्किल जा रहा है। Yes, very good. Drawer, drawee, and payee. Don't miss a single session of chapter 6. It's very important topic. Answer all of my questions. Payee, the party to whom amount is paid. So write down these parties of bill of exchange. Aisha is saying, sir, over. Soumya is saying over. Akshata over. Pritesh over. Okay. चलो बाकी स्टूडेंट्स write down fast. Write down fast. Endorsement means what? Transfer. Endorsee. 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 So now you understood what are parties. Chalo. Foreign bill means which is not drawn in India and accepted in India. So beta, it is called as foreign bill. Promissory note, already explained. Now let's come to important part, accounting entries. In the books of drawer, so you can write it. Promisor means a person who promises, and promisee means in bracket you can write promisor is a buyer, and promisee to whom promise is made is called as seller. Okay, promisor,
In promissory note, who are parties, beta? Promisor. You can write promisor. To whom? Sorry. Who promises? Who promises? Means buyer. In simple language, he's a buyer. And to whom promise is made? And to whom promise is made? He is a sailor. Simple. To whom promise is made is a sailor. And to whom promise, who promises is called as buyer. Write down promise or promisee in case of. Yes, easy che. Over. Chalo. Now, most important point in today's session. Books of drawer and books of drawee. Okay. Drawer means seller or buyer, बेटा. चलो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में. Drawer. Easy छे. Okay. Promisee or payee? No, beta. Payee can be different. Payee can be different. Very good, Anmol. Payee can be different. Okay. So tell me it in comment section. Drawer means seller or buyer? Beta, fast. Drawer, seller छे के buyer? Very good. महिमा, very good. महिमा आज एकदम फॉर्म में आ गई. Sailor. मनीष जैन, आज जैन सब दिख रहे. Who are answering very fast. Okay. Drawer is a sailor. Very good. So what is the first entry? Debtor oblique drawee to sales. But obvious now. First there is a sales, credit sales. So debtor means drawee. Okay. Debtor means drawee to sales. And here entry will be, yes. Now here, yes, you can answer in the books of drawee. Drawee के केस में क्या entry होगी? चलो fast. In the books of drawee, you answer it. You answer it. चलो. रितु क्या कर रही है? Drawee is a buyer. Sorry, drawee is a drawer is a buyer, बेटा. रितु, आपसे उम्मीद नहीं है ये. ये कैसे गलती कर दी रितु आपने? Drawer means a sailor and drawee means a buyer. So what is the entry in the books of drawee? आप लोग आंसर दीजिए. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द फर्स्ट डे. इफ यू डोंट आंसर, interactive session nahi hoga. We are not on Zoom and we are not on face-to-face session. So only comments are only beta medium of exchange. So I cannot ask you questions. Chalo, very good. Who answered very fast? Per Dimple. Dimple answered purchases to drawer. अनमोल ने करेक्ट आंसर दिया है. बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया. Yes, purchases to drawer. What is the entry? Purchases to drawer. Very good. Now, drawer orders. See, drawer orders. So see, I will show you the presentation. Drawer के बुक्स में. So, सेलर के बुक्स में किसका अकाउंट होगा? सेलर के बुक में डेटर का अकाउंट. डेटर इज नथिंग बट ही इज अ ड्रॉवी. In our case, Mahima is a drawee. Okay, I sold goods to sales 100 rupees. Okay, debit plus credit sales is there. To sales. But beta, debtor is saying, sir, I do not have money. I will pay you after 3 months. Okay, I will tell him, please give it in writing. Please give it in writing. So by bills receivable, it is called as
by bills receivable. So now debtor account is getting closed. After giving bill, debtor account is getting closed. So first one, bill is drawn. So what is the entry? Bill is drawn. So drawn की entry क्या होगी? Bills receivable. See, bills receivable account debit to debtors account. Now debtors balance. Debtor first debit था. Now credit. So debtor balance is 0. Now after accepting bill by drawee and gives acceptance to seller, then by bills receivable. See, bill receivable. तो seller के books में क्या आएगा? Bills receivable आएगा. क्या आएगा? Bills receivable. So either he pays cash or he promises. He is getting promise. Okay, he is getting promise. So by bills receivable क्या मिलेगा? Bills receivable. So debtor का balance कितना हो जाएगा? Debtor balance becomes 0. Write it in the comment section. ड्रॉवर के बुक्स में क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल. एंड व्हाट इज द डेटर बैलेंस? ओके, सो आई वांट टू आंसर्स. वन, ड्रॉवर के बुक में क्या आएगा? राइट इट. ड्रॉवर के बुक में क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल. एंड टेल मी डेटर बैलेंस बिकम्स व्हाट? आफ्टर बिल ड्रॉन डेटर का बैलेंस क्या होगा? ड्रॉवर के बुक में क्या आएगा? ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवर, नॉट ड्रॉवी. See, you can see the difference. Dancing देख रहे हो आप. ड्रॉवर के बुक्स में क्या आएगा? ड्रॉवर के बुक्स में. And second answer question is, what is the balance after draws bill? After bill is drawn. ये मैं ड्रॉवर के बुक में पूछा रे. हाँ, आदित्य दर्शन जी आंसर इट करेक्टली. सर बिल्स रिसीवेबल आएगा, बिल्स रिसीवेबल, एंड डेटर्स बैलेंस बिकम्स 0. डेटर का बैलेंस हो जाएगा 0. वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी गुड. बिल्स रिसीवेबल. समीना, समीना किधर से हो बेटा? यू आर फ्रॉम आई थिंक केरला से. वेरी गुड. Bills receivable and debtor balance 0. Debtor balance 0. Now second question. Drawee के books में क्या entry होगी? In the books of drawee, can you tell me the entry in the books of drawee? Second entry, he accepted bill. So he accepted bill. So what is the entry? He accepted the bill. So what is the entry? बेटा महक, बिल्स महक जी, बिल्स पेएबल को 0, बिल्स पेएबल को डेबिट होगा क्या? आप सोचो. बिल्स पेएबल इज लाइबिलिटी और एसेट, बिल्स रिसीवेबल इज एसेट, एंड डेटर बिकम्स 0. ओके, सो सेकंड एंट्री में बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स. बट कैन यू टेल मी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी व्हाट इज द सेकंड एंट्री? यस, वेरी गुड. बेटा हाउ अश्विनी ड्रॉ बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर्स? You want to cancel creditors or you want to increase creditors? And bills payable is liability or asset beta? Think properly. Asset क्या है? Liability है. Liability ना, payable is a liability. And modern approach talks about asset debit balance, liability credit balance, expenses debit balance, income credit balance, and capital credit balance. So you only tell me how bills payable is getting beta debited. Bills payable को क्या आएगा? It's a credit ना. Think logically. Bills receivable is asset, debit balance. Bills payable is a liability, credit balance. So what is the entry? Creditors account debit to bills payable. What is the entry? You can go by modern approach or traditional approach. So traditional bills receivable is never having credit balance beta. Bills receivable always debited and bills payable always credited. Bills payable क्या होएगा? हमेशा credit होएगा. Bills payable. एकदम easy छे रे. Bills payable को credit balance ही होगा. Yes, drawer to bills payable. Think logically. Yes, try to understand these entries. First entry, debtors to sales. मैं 5 बार बताऊंगा ये entries. All entries where to बेटा speak for 5 times. और घर पे बिना देखे recall करना है, बिना देखे. Yes, after this revisions is without watching my बेटा all these lectures. वो आपको खुद से रिवाइज करना है. चलो अंकुर सी, क्यों नहीं समझ रहा है बेटा एंट्रीज? डोंट गिव अप बेटा. व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर?
डेटर्स टू सेल्स. नाउ दिस इज वेरी सिंपल एंट्री बेटा अंकुर, ड्रॉवर के बुक्स में. Okay. Now debtors, yes, beta, we will cancel it. So debtor, we are going to cancel. He's not giving me cash. He's giving me bills receivable. Okay. So bills receivable. Future mein I will get receivable. In future, I will get money of bill. Okay. So it is called as bills receivable. It is asset for me. It is asset for me. In the books of seller, it is asset beta. See, seller के books में कभी भी ड्रॉवी का अकाउंट होगा. And now debtor balance becomes 0. So now you have only two items. One is sales, this is my income, and one is now income ke against I will receive money after 3 months on the asset side. So sales is in the trading credit side, credit, and bills receivable asset. Debtor cancel ho gaya. Okay. Here entry will be purchases. Purchases account debit to creditors. Purchases to creditors. And then beta creditors account we are going to cancel. So creditors to bills payable. Creditors to bills payable. So creditors account will get cancelled, and you left with purchases and bills payable. You left with purchases and bills payable. Easy che? Don't give up. Creditors, and it's your liability. It's your liability. So simple till now. ठीक है. Third entry. Now we are going to see different situations. So till now, बेटा please write down it. अभी तक जितना भी होगा वो लिख लीजिए. बेटा for basics, I am weak in journal entries. So Shweta is saying, बेटा Shweta, please watch my previous sessions. फर्स्ट 4 डेज के लेसन है ना, और पिछली बैच के लेक्चर्स, प्लीज वॉच इट केयरफुली. बेसिक्स इंप्रूव हुआ ना, नथिंग इज डिफिकल्ट. प्लीज इंप्रूव योर बेसिक्स. यस सिंधु, प्लीज बेटा, दिस चैप्टर के मार्क्स विल बी 10 to 16 मार्क्स. सिंधु प्लीज don't do study for passing purpose. Passing is different and logically understanding is different. We are CA people. We never skip a single chapter in option. Okay. At least we know basics of that chapter. I'm not saying 100% आपको आना चाहिए, but try to get it 100%. CA कभी गिव अप नहीं करता है कोई भी सिचुएशन में. Now we have 4 options. Now drawer has that bill. Okay, over. Sir, no, sir, this you have to write it in 100 pages notebook. All these basic things you have to write it in the 100 pages notebook. I will tell you when to write it in 400 pages. Chalo. Now bill is retained. Bill is retained.
चलो, हो गया क्या? बिल इज रिटेन्ड. Bill is retained. What is the entry, beta? Bill is retained. Yes. Tell me bill retained की entry. चलो भाई बोलो जल्दी जल्दी. Yes. Bill retained. Now bill Sanket sir, sailor. He kept that bill with himself. So beta there will be no entry. Bill retained, no entry. And now draw is not concerned for that. कुछ भी करो यार bill के साथ मुझे क्या करना है. So draw is not concerned for that. Okay. Next one. Now bill is discounted. Tell me what is the entry for discount. Discount means you will discount it with bank. आपको बैंक के साथ डिस्काउंट करना है बिल.
So entry will be bank account debit. See, we are getting discount. So bank account debit, discount account debit to bills receivable. रिटेन का मीनिंग क्या? बिल अपने पास रखना. So what is the entry? Bank account debit, discount account debit to bills receivable. Bank account debit, discount account debit to bills receivable. Easy to entry. Here he is not concerned. No entry. Here he is not concerned, so no entry. Okay, so 100. Bank account debit, write down. Discount account debit to bills receivable. So second situation, retain मतलब रखना and second situation में discount करना. No entry. Now think for third entry. रिटेन का मीनिंग होता है बिल को अपने पास ही रखना. रिटेन मीन्स बिल इज विथ यू. तो बेटा कवर्ड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल तो होगा नहीं. इन कवर्ड यू पुट दैट बिल. सो एंट्री विल बी नो एंट्री. सेकंड सिचुएशन डिस्काउंटेड बिल. Discounted bill. So bank account. So you will visit bank and bank will give you 900 rupees for 1000 rupees. Okay. So now bill is with bank. So bills receivable goes out from you. Bank balance increases. So 900 and discount is your loss. Retain का meaning समझ में आया सबको? Retain means to keep it with yourself. Yes, beta. Kavya ji, please tell it in English. Okay. To keep it with yourself is called as discount. Chalo, write down third situation. Bill endorse. So tell me entry fast. But Roy is receiving discount. So no, why no entry? Are beta, bank is paying 900 to drawer. Draw is not concerned with that bill.
ड्रॉई को क्या लेना देना है बिल के साथ, क्या किया जाए? ड्रॉई का कुछ लेना देना नहीं है. So bill endorse. Now bill is endorsed. So I'm transferring to Mona ma'am. So Mona ma'am is my creditor. Now I'm giving her that bill. So Mona ma'am becomes receiver. So endorsee account debit and you transfer that bill. So to bills receivable. Endorsee account debit to bills receivable. Bill is now with Mona ma'am. So I transferred it. And drawee, Mahima is not concerned ना मैं किसको बिल दूं. Okay, so महिमा के बुक्स में नो एंट्री. महिमा के बुक्स में नो एंट्री. So Mona ma'am account debit, that endorsee account debit to bills receivable. Endorsee to bills receivable. Very good. And now last one. Bill sent for collection. Bill sent for collection. So please write it, beta. Please write it. Bill sent for collection is the last situation, and you answered it. Sent for collection means what? I appointed someone to whom he will recover that bill from Mahima. तो मैं किसी को बोलूंगा कि भाई लोगों को ही बुलाऊंगा कि आप महिमा के पास से वो बिल ले लेना. So it is bill sent for collection. It is called as bill sent for collection. So fourth situation, bill sent for collection. Tell me the answer. Sent for collection. Bill sent for collection entry will be bill sent for collection to bills receivable. Yes, write down. Bills receivable goes out. Bill sent for collection to bills receivable. Yes, every one of you write down this entry. चलो भाई जल्दी जल्दी लिखो. Bill sent for collection to bills receivable. Here no entry. So let's quickly revise this. चलो चलो fast अभी थोड़ा fast करो. Yes, now you answered it. चलो जल्दी से. अभी मैं आपको ये क्वेश्चंस पूछता हूं. Understand. What is the first entry? Debtors account debit to sales. Correct? What is second entry? Debtors को cancel करना है. So debtors getting cancelled.
and bills receivable asset for me. He accepts this bill. Now we have four situations. First situation, retain means to keep with yourself. Retain. No entry. Now bill is discounted. Beta, please try to understand it quickly. Bank account debit. Discount is my loss to bills receivable. Bill is not with me. Bill is discounted. Bill is discounted. Then bill is endorsed. Bill is endorsed. Creditors account debit, you can see here. Now bill is not with me. Bill is getting cancelled. Now there is no bill. And here bill is with me. Bill is with SS. Endorse के केस में भी bill is not with me. And bill sent for collection, bill is not with me. Bill sent for collection account debit to bills receivable. Bill sent for collection to bills receivable. So four situations, no entry, discounted bill, endorsed bill, and bill sent for collection. In first case, bill is retained, no entry. Bill is discounted, bank account debit, discount account debit to bills receivable. So four situations. Now, yes. Now it is clear, beta. In all these three situations, bill receivable is getting cancelled. Bill is not with me. And remaining cases, bill is with me. Retain case. Yes. Retain के case में मेरे पास bill होगा. Honor. Now, beta, after 3 months, very, very important. Mahima paid me this amount. Mahima paid me this amount. Again, four situations. Mahima paid me this amount. Honor. Honor के केस में क्या होगा? First case, I am getting the amount from Mahima. So bill is with me. Now I am giving that bill to Mahima, and Mahima is giving me amount. Okay. So bank account debit to bills receivable. So first situation, bank to bills receivable. Mahima will pay to bank. Mahima will pay to bank. Bill discounted. Bill is with bank. Okay. So here bill is with second situation. Bill is with bank. Third situation, bill is with Mona ma'am, creditor. And here bill is with that bhai log, with agency. Okay. So in second situation, bank account, no entry because bank has that bill and Mahima will pay to bank. So my role is 0. So in second situation, bill entry, no entry. Third situation, bill is with Mahima, bill is with Mona ma'am. So my role, Mahima will pay to Mona ma'am. So my role will be 0. So no entry in my books. And last situation, bill is with agency and that agent will pay me. So my bank balance will increase and agent balance will decrease. So bank's bill sent for collection is debited. Now it is credited. So bank account debit to bill sent for collection. So understood all these four situations? Easy che? All these four situations. First situation, bill is with me. So bank account debit to bills receivable. Second situation, bill is with bank. Please try to understand different situations. Bill is with bank. So Mahima pays bank directly. My role 0. मेरा रोल कुछ भी नहीं आएगा. तीसरे केस में बिल इज विथ एंडोर्सी.
एंडोर्सिंग मतलब मोना मैम के पास बिल है, मोना मैम को महिमा पे करेगी, मेरा रोल 0। एंड लास्ट सिचुएशन में भाई लोग मुझे पे करेंगे, सो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा एंड भाई लोगों का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो भाई लोगों को बिल स्पेंड फॉर कलेक्शन डेबिट था, तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, खत्म। वेरी सिंपल। ऑल these 4 situations are very simple. Okay. In the books of drawee, what is the entry? ड्रॉई करेगा एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाइबिलिटी कैंसल्ड। ओके, सो बुक्स ऑफ ड्रॉवी में बिल्स कैंसल्ड हो जाएगा, लाइबिलिटी कैंसल हो जाएगा एंड उसका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। सो मेरे बुक्स में बैंक रिसीवेबल कैंसल हो गया था, बिल्स रिसीवेबल, उसके बुक में बिल्स पेएबल कैंसल होगा। ओके, सो राइट डाउन ऑल दिस सिचुएशंस। चलो अभी लिख लो। चार्ज सिस्टम इज इजी और 1 by 1 एंट्रीज आर इजी बेटा। तो इधर तो नो एंट्री था। ड्यू डेट पे बिल ऑनर, राइट डाउन ड्यू डेट, बिल ऑनर। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल these 4 situations. Retain case, bank to bills receivable, write down bank to bills receivable. All 4 situations, 1 by 1 chart. चलो बेटा फटाफट कीजिए। राइट डाउन ओवर, आफ्टर राइटिंग दिस ओवर लिख दो ऑनर के केस में। ऑनर का लिख दो बेटा फटाफट एंड देन टेल मी डिसऑनर एंट्रीज। देन टेल मी डिसऑनर, बेटा डिसऑनर में महिमा अकाउंट इज रीओपन, महिमा अकाउंट इज रीओपन, दिस इज अ लॉजिक। So dishonor, you only tell me. Honor, I told you exactly situation 1, 2, 3, 4. Yes. Dishonor, you tell me. Dishonor. Chalo. All 4 situation. 1, 2, 3, 4. Giving you exactly 1 minute. Dishonor, please tell me entries. Simple wrong, beta. So logically, think logically. Mahima account is getting reopened. Mahima account is getting reopened.
See, in dishonor entry, in dishonor entry, in first case, bill is with me. Okay, bill is with me. Remember, in all cases, Mahima is debited. Mahima means drawee. Drawee is debited because she is now debtor in all situations. Drawee account debit, drawee account debit, drawee account debit. In all situations, drawee account is debited. In first situation, bill is with me. Now bill is getting cancelled, but I'm not getting money. So drawee account debit to bills receivable in first case. In second case, drawee to bank. In third case, drawee to creditors. And in last situation, drawee to bill sent for collection. Because we have to pay to bank. So bank is my creditor. Endorsee is my creditor here. Endorsee, I have to pay to endorsee. So endorsee reopened. So drawee to endorsee. And last situation, drawee to bill sent for collection. You can see in all cases, drawee is debited. See, beta, if you understand these entries, this chapter is nothing. Here, bills payable account debit getting cancelled to drawer. Drawer is reopened. ड्रॉवर को पैसा देना है. बिल्स पेबल कैंसल्ड. बिल्स पेबल कैंसल्ड. सर थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है. इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. बट इफ यू रीड दिस एंट्रीज अगेन एंड अगेन इन टुडे होमवर्क, you won't find a difficulty in these questions. Please, इतना सा and thinking develop कीजिए. Develop your thinking. कि क्या कैंसिल हुआ, कौन सा अकाउंट ओपन हुआ. That's why I don't want to refer a single entry from study material, because I can visualize these entries, all situations. ओके, वेरी गुड बेटा प्रगति. ठीक है, लेट्स रिवाइज इट. चलो एक बार रिवीजन करते हैं. राइट डाउन बेटा दिस ऑल एंट्रीज, सिचुएशन 1 2 3 4 एंड राइट डाउन ओवर. सो वी विल क्विकली रिवाइज ऑल these entries. Today we have to see accommodation bill also, concept of accommodation bill. So entries in today's session, I will develop your basics. एक बार हिंदी में बता दूं. अश्विनी बोल रही है, एक बार हिंदी में बता दीजिए. अश्विनी देखो बेटा, बिल डिसऑनर हुआ. बिल डिसऑनर हुआ मतलब क्या कि जो हमारी महिमा थी, महिमा ने क्या बोला कि सर मैं लुक्खी है, मेरे पास पैसा नहीं है ड्यू डेट पे. ठीक है, अभी पहली केस में बिल किधर था बेटा? बिल मेरे पास था, संकेत सर के पास, मेरे कबड़ में रखा था. मैं महिमा के पास गया, महिमा को बोला महिमा प्लीज मुझे पैसा दीजिए मेरा ड्यू डेट पे. तो महिमा बोली सर मेरे पास पैसा नहीं है. तो मैं बोला ठीक है बेटा महिमा, मैं अभी उसके साथ क्या करूंगा वो बात की बात है, पर अभी मेरा बिल डिसऑनर हो गया. सो मैं महिमा को बोलूंगा बेटा महिमा अभी तेरा अकाउंट जो है वो मेरे बुक्स में रीओपन हो गया. अभी महिमा जो थी वो मेरे बुक से हट गई थी, मेरे बुक्स में से हट गई थी, जीरो बैलेंस हुआ था स्टार्टिंग में क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया था. अभी क्या होगा, महिमा रीओपन करना है. सो रीओपन करना है तो महिमा को डेबिट द्यायचं, महिमा को डेबिट देने का और बिल रिसीवेबल को कैंसिल करायचं. सो बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल. ओके, क्योंकि बिल मेरे पास था, अभी बिल का कोई वैल्यूज नहीं है. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू महिमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. सेकंड सिचुएशन, बिल किसके पास था? बैंक के पास था. बैंक गया महिमा के पास, बैंक ने महिमा को बोला महिमा प्लीज पैसा दो. बैंक को बोला, महिमा बोली मैं लुक्खी, मेरे पास पैसा नहीं है. अभी क्या होएगा, वो वहां से उठ के मेरे पास आएगी, बैंक आएगी. कौन मेरे पास आएगा? बैंक का मेरे पास आएगा. मैं महिमा को कॉल करूंगा, महिमा क्या ये तूने गद्दारी की, तूने पैसा ही नहीं दिया.
तो महिमा बोलेगी सर सॉरी मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं महिमा को वापस मेरे बुक्स में लेके आऊंगा, महिमा अकाउंट को डेबिट दूंगा, और मुझे किसको पैसा देना है, मुझे बैंक को पैसा देना है टू बैंक अकाउंट, बैंक मेरा क्रेडिटर हो जाएगा, बैंक मेरा क्रेडिटर हो जाएगा। सो महिमा टू बैंक। तीसरी सिचुएशन, बिल किसके पास था, मोना मैम के पास। मोना मैम किसको जाके मिली, महिमा को जाके मिली। महिमा बोली मैं लुक्खी है, तो वापस से वही स्टोरी कंटिन्यू किया, मेरे पास पैसा नहीं है। तो महिमा मेरे मोना मैम रोते रोते मेरे पास आई कि संकेत भाई, संकेत भाई तो नहीं बोल सकती, हाँ संकेत जी मेरा पैसा मुझे मिला नहीं। तो संकेत जी मुझे पैसा नहीं मिला, मैंने बोलूंगा कि ठीक है मैं महिमा, महिमा पैसा दे प्लीज। महिमा बोली मेरे पास पैसा नहीं है, सो मैं महिमा को डेबिट मारेगा, महिमा को डेबिट मार के मैं और किसको पैसा देने वाला हूँ, मोना मैम को, टू एंडोर्स अकाउंट। सो महिमा से आएगा, मोना मैम को जाएगा इन फ्यूचर, मतलब मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। सो अभी तो मुझे ओपन करने पड़ेंगे अकाउंट्स, मोना मैम अकाउंट को क्रेडिट करेगा, महिमा को डेबिट देगा। अभी वो भाई लोग गए, भाई लोग लेके गए पूरा पैसा इधर है, और महिमा भाग गई थी वहां से। तो भाई लोग आए मेरे पास कि देखो ये ड्यू डेट पे हम लोग तो गए, उधर ताला दिखा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अभी महिमा दिखेगी तब देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले जो भाई लोग हैं वो मेरे पास आ गए, और मैं महिमा को कॉल करके बोला, महिमा बोली मैं बाद में भेजती हूँ पैसा। सो महिमा को वापस रीओपन किया, तो महिमा अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अभी इतना इजीली हिंदी में बताया हुआ है। ओके, हिंदी में क्लियर हुआ क्या आपको अभी? अश्विनी जी, अरे बहुत इजी एंट्रीज है रे, बहुत इजी एंट्रीज है, ऐसा क्विकली रिवीजन करने का फटाफट। प्रीतेश सुतार बोल रहे ऑसम एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। ओके प्रीतेश, पूरा क्लियर हो गया ना? ठीक है, अभी रिवीजन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी विल रिवाइज इट वन बाय वन, रिवीजन। अभी ये देखो, ये बंदा बोल रहा है अरे बेटा अंकुर, ऑनर मतलब पैसा मिलना, ऑनर किया मतलब पैसा मिल गया, ऑनर मतलब पैसा मिलना। डिसऑनर मतलब महिमा अपने दिए हुए वादे से बेटा मुकर गई, तो उसको बोलेंगे डिसऑनर। महिमा ने ऑनर किया बिल, ऑनर किया मतलब टाइम पे पैसा दे दिया, और टाइम पे पैसा नहीं दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसऑनर। अरे कुछ 11 12 स्टैंडर्ड में किया है क्या नहीं? पंजाबी असलीफ बोल रहा है नाउ आई गॉट इट 70%, 30% है ही क्या अभी तक? चलो, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एसएस बुक्स, महिमा बुक्स। एसएस के बुक्स में महिमा अकाउंट ओपन होगा। महिमा, शी इज माई डेटर ड्रॉवी। पहले हम लोग इधर की एंट्री देखते हैं, टू सेल्स, सेल्स इज माई इनकम। इधर महिमा विल पास एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस टू एसएस, ही इज माई क्रेडिटर, ही इज माई क्रेडिटर। ओके, नाउ Mahima does not have money. She is giving promise for pay me after 3 months. So bills receivable is asset for me, asset debit balance. To Mahima, she is giver. Beta, she gives me that acceptance of bill. So debtor becomes giver. Mahima cancelled. Debtor becomes giver. Mahima cancelled. So bills receivable is in my books. Here in Mahima's books, beta, creditor becomes receiver. Creditor becomes receiver. So SS account debit to bills payable. Bills payable is a liability for Mahima. बिल्स पेबल इज लाइबिलिटी, एसएसएसएस कैंसल्ड। सो महिमा के बुक्स में परचेस को डेबिट होगा टू बिल्स पेबल। ओके, सो देयर इज नो बैलेंस इन महिमा अकाउंट इन माय बुक्स, एंड देयर इज नो बैलेंस इन एसएस अकाउंट इन महिमा's बुक्स। बट एकदम इजीली बोलते आना चाहिए जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं। कोविड था जब, वही बोलो अभी। चलो सेकंड, नाउ सिचुएशंस। नाउ एसएस विल रिटेन दैट बिल। एसएस ने उसके कबड़ में जाके वो बिल रख दिया, तो एसएस ने एंट्री किया, नो एंट्री बाय संकेत सर। एसएस के बुक्स में नो एंट्री, नो प्रॉब्लम बेटा अंकुर, ठीक है।
Okay. Second case, discounted bill. Bill is discounted. So Sanket sir wants money immediately. So he visited bank. Bank has given 1000 ke badle mein 900. So bill is of 1000. Bank has paid only 900 rupees. So bank account debit 900. Sanket sir ka loss, discount account debit. And now bill is with bank. So bank account debit, discount account debit to bills receivable. Bill is not with Sanket sir. Bill is with bank. Bill is with bank. Here, endorsee. Bill endorse. Bill endorse Mona ma'am account debit to bills receivable. So beta, endorsee account debit. Endorsee account debit to bills receivable. Mona ma'am is endorsee creditor to bills receivable. So now bill is with Mona ma'am. Bill is not with me. And last one, bill sent for collection to bills receivable and bill sent for collection account debit. You can see in all situation, bill receivable is credited, but here no entry, bills receivable is with me only. Bill is with Sanket sir. And here bill is with Bhai Log, agency के पास. Yes, understood? Now this is revision ना. So due date पे क्या होगा? अंकुर, bill honor. Honor मतलब महिमा बेटा, महिमा यस इसने इज्जत से पैसे दे दिए. महिमा ने इज्जत से पैसे दे दिए 3 months के बाद. So here बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया to bills receivable क्योंकि bill is with Sanket sir. In remaining situation, no entry. No entry. But here entry because bill is with agency. So agency will pay me. Agency will pay me. So bank account debit to bill sent for collection. So bill sent for collection account, bill sent for collection account cancelled. So bill is with bill agency. So agency will pay me. And in case of dishonor, entries are, first situation, bill is with me, but Mahima is not ready to pay. So Mahima account ko debit hoega. Mahima means drawee account debit in all cases. Mahima debit, Mahima debit, Mahima debit, Mahima debit. In all these situations, to bills receivable. To bills receivable. To bank. To Mona ma'am. And to bill sent for collection. बड़ा इससे easy में नहीं कर पाएगा. This is a quick revision. Now, in next session, I will ask you directly entries. How I'm going to explain you. And here है ना. Bills payable to bank. Bills payable is getting cancelled. And here bills payable to SS. पैसा दिया तो bills payable to bank. पैसा नहीं दिया तो bills payable to SS. अरे एकदम सिंपल छे, एकदम. अभी नेक्स्ट सिचुएशन में कैसे पूछेगा? नाउ व्हेन यू आर एट प्रो लेवल, सो आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट. In next session, if I ask you endorse bill, so endorse bill matlab how to answer it. Endorse bill means Mona ma'am ko bill diya, bill goes out, so Mona ma'am account debit to bills receivable. Yes, endorse it to bills receivable. Next, bill retained, so you will answer no entry sir, bill retained no entry. Sir, bill discounted is bill दिया बैंक को, बैंक बैलेंस बढ़ गया, so बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. हाँ याद होगा सर. बिल्स रिसीवेबल ऑनर, so which situation? रिटेन बिल ऑनर हुआ. बिल मेरे पास था, बिल लेके मैं महिमा के पास गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. इतना फास्ट आना चाहिए, बैंक टू बिल्स रिसीवेबल. ये लेवल बढ़ानी है बेटा आपको. बैंक टू बिल्स रिसीवेबल. सो सेकंड सिचुएशन, बिल इज डिस्काउंटेड. बिल था बैंक के पास, महिमा ने दे दिया बैंक को बिल, पैसा दे दिया, मेरा रोल जीरो. सो जीरो नो एंट्री सर. सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन. भाई लोग गए महिमा के पास, उधर से पैसा लिया, मेरे अकाउंट में डाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. आ गया. सो बिल डिसऑनर मतलब महिमा रीओपन करना है, महिमा जिंदा हो जाएगी. तो महिमा अकाउंट को डेबिट देना है. एंड सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर होगा. रिटेन बिल टू बिल्स रिसीवेबल. बैंक के पास है टू बैंक, मोना के पास था, डिसऑनर हुआ टू मोना, एंड लास्ट वन टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. खत्म.
क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज? थोड़ा सोचने का, थिंक इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर इज एग्जैक्टली बिल, विथ मी, विथ बैंक, विथ मोना मैम और विथ भाई लोग. तन्मित कौर. अरे साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे डरते नहीं है कभी, उल्टा सबसे तेज आंसर देते साइंस बैकग्राउंड के बच्चे. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड क्या? प्लीज 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 टेल मी इट इन कमेंट सेक्शन. बेटा इन केस ऑफ ड्रॉई के बुक्स में किया ना एंट्री, बिल्स पेबल तो कैंसिल करना है. बिल्स पेबल इज गोइंग टू कैंसिल एंड इफ ही ऑनर्ड बिल सो टू बैंक, इफ ही डिसऑनर बिल तो एसएस रीओपन हो जाएगा. महिमा के बुक्स में एसएस को पैसा देना है, सो बिल्स पेबल टू एसएस, सो एसएस क्रेडिटर हो जाएगा. एसएस को पैसा वापस देना है. अनमोल पटवा. अरे उसने पैसा दे दिया महीना महिमा ने, तो बिल्स पेबल को कैंसिल करना है ना, तो बिल्स पेबल टू बैंक, एंड महिमा ने पैसा नहीं दिया तो बिल्स पेबल टू एसएस. कब पूछना है, आज या नेक्स्ट सेशन में? आज पूछना है, नेक्स्ट सेशन में पूछना है? रैंडमली पूछू? यस, यू ओनली टेल मी व्हेन टू आस्क, टुडे सेशन और नेक्स्ट सेशन. रैंडमली 3 एंट्रीज पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट बोलते हैं. हु इज आंसरिंग फास्ट? फास्टेस्ट फिंगर फास्ट. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कौन बोल रहा है? चलो. रॉय के बुक्स में सिचुएशन नहीं है आयशा. रॉय के बुक्स में एक ही सिचुएशन है, बिल्स पेबल टू बैंक और बिल्स पेबल टू एसएस. ड्रॉवर के बुक्स में सिचुएशंस होती है. ड्रॉय के बुक्स में कैसे सिचुएशन आएंगे? ड्रॉय बोलेगा कुछ भी करो, डिस्काउंट करो, मोना मैम को दो, भाई लोगों को बुलाओ. यस, रॉय इज नथिंग बेट अ कंसर्न फॉर ऑल दिस सिचुएशन. देयर विल बी नो एंट्री, इधर नो एंट्री आएगा. यस, चलो लेट्स सी. Only 3 questions. Let's see who is answering fast. So just you have to note down. Whenever you are answering, you have to write like 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ऐसा लिखना है आपको. चलो चलो चलो. 1, 2, 3. First one. Bill endorse honor. Bill endorse honor. First entry. I am asking you. Please don't refer your books. Bill endorse honor. Who is answering fast? Bill endorse honor. So first person who is going to answer, the name is Bill endorse honor. First one by आयशा. आयशा आंसर सबसे तेज. एसआरओ स्टूडेंट आयशा. सेकंड वन आरपी. ओके, आरपी ने बोला है सेकंड आंसर. नो एंट्री इज अ करेक्ट आंसर. वेरी गुड. नो एंट्री. Bill endorse honor. Bill is not with me. Bill is with Mona ma'am, and Mona ma'am got her money back. So my role is 0. So no entry, no entry, no entry, no entry. And Swatigiri, इन्होंने गलत जवाब दिया है. समीना ने गलत जवाब दिया है. बिल एंडोर्स ऑनर पूछा था, ना कि ओनली बिल एंडोर्स पूछा था. आई आस्क यू बिल एंडोर्स ऑनर. सो यू हैव टू थिंक बेटा. दोज हु रोड द एंट्री, प्रगति, अंश, बेटा ऑल आर रॉन्ग. और सबसे डेंजर एंट्री दिया है मस्तान ने. नेक्स्ट वन. So answer winner is Aisha. Bill discounted. Wait. Bill discounted dishonor. Bill discounted dishonor. Think logically. Think logically. Fast. Bill discounted dishonor number 2. Entry is Bill discounted dishonor. चलो जल्दी से बताइए. And winner is सेकंड बेटा अंकुर. रॉन्ग आंसर बेटा. नो एंट्री कैसे होएगा?
डिसऑनर हुआ तो महिमा विल बी रीओपन्ड. सो ड्रॉवी, महिमा इज ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू bank account. And correct answer by Anmol, CRO student. CRO. Drawee to bank. Very good. Very good. Debtor to bills receivable. Wrong answer, Vishnu. Please improve your basics. Very good. Bills receivable to bank to discount. No, beta. Very, very Punjabi Asi. Please, please revise it today itself. You are answering. Yes, यही मेरे लिए सबसे बड़ा एक ये लग रहा है आप एटलीस्ट इन्वॉल्व हो रहे हो. वेरी गुड. नेक्स्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन. लेट्स सी एसआरओ और सीआरओ से आंसर आता है क्या दूसरे इससे आता है. रॉन्ग आंसर है बेटा. ड्रॉई टू बैंक इज अ करेक्ट आंसर. अदर आंसर्स आर ऑल रॉन्ग. अंडरस्टैंड इट. अंडरस्टैंड इट. बिल्स डिसऑनर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री क्या होगी. ड्रॉवी के बुक्स में मतलब महिमा के बुक्स में. महिमा के बुक्स में एंट्री क्या होगी. बिल डिसऑनर. थर्ड क्वेश्चन. बिल डिसऑनर ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री क्या होगी. ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री क्या होगी सर. सर जल्दी से बताइए. ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री क्या होगी. योर फीडबैक्स आर इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम सेशंस को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ. अंशुका रॉन्ग बेटा. एंड आयशा. ओके आयशा ने 2 बार आंसर दिए एंड शी इज करेक्ट. आयशा इंटेलिजेंट गर्ल. बिल्स पेबल टू ड्रॉवर. Bills payable to Sanket sir, drawer. And the correct answer is by Aisha. Very good. Bills payable to drawer. Bills payable tha beta. Alfitangal Mastanji. It's not bills receivable to drawer. It's bills payable to drawer. Bills payable to drawer. ठीक है. चलो. बस. So these are the entries. See, now I'm going to teach you accommodation bill in next 15 minutes. It is also one of the important part of this chapter. I know this chapter is slightly difficult to understand it for the first time, and after a gap of almost beta basics के साथ आपका रिश्ता ही टूट गया है. So वापस कम बैक करने को थोड़ा टाइम लगेगा. तो प्लीज थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए और आप लोग भी लीजिए. नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. बट प्रॉमिस मी इन नेक्स्ट सेशन यू कैन आंसर एनी एंट्री. It might be acceptance, it might be honor, it might be dishonor, but you won't find a single problem in any journal entry. So next session, make it very simple. Try to understand all entries because next session में थोड़ा सा difficult जाएगा if you don't revise it. So now a last part of this chapter is accommodation bill. If possible, try to solve questions from study material. So in next session, you will find it very simple. Ankur Verma is saying this is my first lecture. Beta then why beta first lecture? आपको पहले के lectures देखने चाहिए. Basic seat strong नहीं होंगे तो कैसे होगा. Okay. Accommodation bill. Last part of today's session. Please
Try to understand this concept because this is more tricky concept, accommodation bill. See beta, whenever you are passing journal entries, understand it कि जब भी आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हो तो मिनिमम टाइम में ट्राई टू रिकॉल इट. ओके, मिनिमम टाइम. फॉर एग्जाम्पल बिल एंडोर्स, बिल इज विथ मोना मैम को ट्रांसफर करना है, बिल मेरे से जाएगा, सो मोना मैम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. ओके, सो रिमेंबर इन दिस वे. सो एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल, मोना मैम इज एंडोर्सी. सेकंड वन, बिल एंडोर्स ऑनर, मोना मैम ने महिमा को कांटेक्ट किया, अपने आप में बिल हो गया, नो एंट्री. बिल एंडोर्स डिसऑनर, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन वाइज. बिल एंडोर्स डिसऑनर, महिमा ने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, लुक किया, महिमा अकाउंट डेबिट टू मोना मैम को पैसा देना पड़ेगा, सो महिमा अकाउंट डेबिट टू मोना मैम. बिल डिस्काउंटेड, बिल इज विथ नॉट मी. नाउ बिल डिस्काउंटेड, मैं बैंक के पास गया, सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. मैंने बिल दे दिया, बैंक में पैसा आया पर मुझे कम पैसा आया, सो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट होगा. बिल डिस्काउंटेड ऑनर, बिल गया बैंक के पास, बिल बैंक के पास गया था, बैंक महिमा को कांटेक्ट करेगी, महिमा पेमेंट कर देगी, ऑनर किया, मेरा रोल 0, नो एंट्री. बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, बैंक गया महिमा के पास, महिमा बोली लुक की बोली तो बैंक मेरे पास आएगी, सो महिमा अकाउंट को डेबिट देगा मैं एंड बैंक को क्रेडिट करूंगा, महिमा डेबिट टू बैंक. ओके, बिल रिटेन नो एंट्री. ओके, बैंक बुक में क्या आएगा, नो एंट्री. फिर बिल रिटेन ऑनर में महिमा के पास गया, बिल दे दिया, पैसा ले लिया, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. एंड तीसरी सिचुएशन में डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. Easy, all situations easy. सिचुएशन बाय सिचुएशन याद करो. Yes. Last part of this, please make sure that next 15 minutes you won't take a break and your concentration will be 100%. Accommodation bill is not allowed in India. Accommodation bill means what? When both parties are in need of funds. Okay, when both parties are in need of funds. So beta, first thing, when both parties are in need of funds, assume same situation, Sanket sir needs 600 rupees, cash needed. Mahima needs 300 rupees. So total need is 900 rupees. There is no purchase sales. In accommodation bill, compulsory you have to visit bank and take, one party will accept the bill, one party will draw the bill. Okay. But there is no purchase sale transaction. No purchase sale. So you can write it. Bank will charge some discount. 60 for Sanket sir, 30 for Mahima, 90 overall. So bill amount is 990. Bill amount is 990. Out of that, 660 borne by Sanket sir and 330 borne by Mahima. Okay, so bill amount. So finally bill amount is 990. So write down this. When there is no purchase sales. What is accommodation bill? जब purchase और sale नहीं होता है, मतलब महिमा कुछ बेचती नहीं, सॉरी संकेत सर कुछ बेचते नहीं, महिमा कुछ बाय नहीं करती, पर दोनों पार्टीज, दोनों को पैसों की जरूरत है. पैसा बेटा दोनों को जरूरत है. तो बेटा इंडिया में तो सबको ही पैसों की जरूरत है, तो इंडिया में अलाउड नहीं है. फिर भी क्या सीखना है ना, कभी फॉरेन चला गया तो गलती से एंट्रीज पता होनी चाहिए, ये आपको डेवलप कर रही है ये एंट्रीज. Accommodation bill. Okay, when both parties are in need of funds. फोकस है पूरा. लिखा क्या? ओवर लिख लो फटाफट.
लिखो यार, जल्दी 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 जल्दी। देखो, अच्छा टीचर तब कहलाया जाता है जब मैं कुछ सिखाता हूँ और आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती है 100%। और अच्छा स्टूडेंट तभी कहलाया जाएगा कि वो 100% फोकस करता है। ओके, और जो स्टूडेंट 100% फोकस करता है, मुझे नहीं लगता मेरा सेशन उसको नहीं समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। यस। क्योंकि मुझे उतना भरोसा है सिर्फ एक ही, मेरे लाइफ में मैंने जो समझा है वो नहीं समझ में आता है कोई भी चीज। और वो कौन होगा, सोचो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैं उसको समझाता हूं फिर भी नहीं समझ में आता है उनको। एक ही पर्सन है। यस, ओवर। मेघना जी, एकोमोडेशन बिल, इसका मतलब होता है, एकोमोडेशन बिल का मीनिंग होता है कि संकेत सर और महिमा दोनों को पैसों की जरूरत है, 900 रुपीज। पर अभी क्या होगा, वो लोग, उनके पास पैसा नहीं है तो उनको बैंक को जाना पड़ेगा। बैंक बोलेगी कि मैं 90 रुपीज डिस्काउंट लेंगे। कितना? 90 रुपीज। 90 रुपीज आपका कटेगा। 900, आज 900 रुपया मिलेगा, ऑन ड्यू डेट 990 पे करना पड़ेगा। टुडे बैंक विल पे, बैंक गिव्स 900 रुपीज एंड 990 बैंक विल टेक फ्रॉम अस on due date after 3 months. After 3 months, okay, on due date bank will take 990 rupees. So this is called as, today bank gives 900 rupees. आज कितना देगा बैंक? ओके, वेरी गुड बेटा, स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। एक ही जन है जिसको समझ में नहीं आता, महिमा बोल रही है आईसीआई। हाँ बेटा, मोना मैम इज अ करेक्ट आंसर। एक वही है जिनको मैं कितना भी बोलूं तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो बैंक गिव्स 900 रुपीज and after 3 months I will give to bank, Mahima and me will give to bank rupees 990. So this is called as accommodation bill. There is no purchase or sales in this transaction. There is no purchase and sales. Chalo, so let's see SS books, Mahima books. SS and Mahima. So now very simple, one party has to accept the bill. So I am a drawer and one party accepts bill, she is a drawee. So drawer, drawee. SS accepts bill. Okay, sorry, SS draws bill and Mahima accepts the bill. What is the amount of bill, beta? 990. What is the bill amount? 990. So first entry, there is no purchase sale entry. Huh? Bills receivable is asset. Bill receivable is asset to Mahima. Now see, Mahima is open in my books of accounts. Mahima is my creditor because I have to pay 990 में से थोड़ा amount to Mahima. Okay, so I will draw the bill of rupees 990. But this is a fake bill. This is a fake bill. Remember, there is no purchase and sale in this transaction. What is the entry by Mahima? SS account debit 990. SS is the debtor and she accepts the bill to bills payable. See, what is the difference? You can write these entries. SS books and Mahima books. Write down. See, there is no purchase sales. So Mahima account is open account. But if you see, and SS is also open. Open account hai. So what is the difference between normal bill of exchange and accommodation bill? In normal bill of exchange, first there is a sale entry, purchase entry. So Mahima account and Sanket sir account is getting cancelled, balance 0, and only bills receivable account and sales account is open, and bills payable and purchase account is open. But here there is no purchase and sale. So Mahima और SS का account open रहेगा and bill of exchange में SS और Mahima का account close हो जाता है. So that is only the difference in accommodation bill and normal bill of exchange.
सो नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज में परचेस सेल होने की वजह से महिमा अकाउंट और एसएस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया था और सिर्फ बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल अकाउंट थे। पर इधर बेटा ये दोनों अकाउंट्स ओपन है, महिमा भी और एसएस भी। महिमा किसके बुक में? एसएस के बुक में, एंड एसएस इन महिमा's बुक्स। ओके, सेकंड वन, सेकंड वन समझ लो, बिल्स रिसीवेबल टू महिमा एंड एसएस टू बिल्स पेबल। हाँ 100 पेजेस नोटबुक बेटा, 100 पेजेस। आज कुछ भी 400 पेजेस में कुछ भी नहीं लिख रहा है। These all are concepts, so don't write it in 400 pages notebook. When you revise it, it is very important on 1 month before exam. So bills receivable to Mahima and SS to bills payable. Can you tell me it in comment section whether Mahima account is open or whether Mahima account is closed, or SS account and Mahima accounts are opened or closed बेटा accommodation bill में? चलो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, महिमा अकाउंट और एसएस अकाउंट ओपन है या क्लोज है? बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, लास्ट 10 minutes. I know now you are very hungry. Oh my God. Accommodation bill. Open, 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 open. Okay. Now, bank account debit 900. Now, SS will visit. Acha, here, what is the transaction? Bill drawn, and bill accepted. Bill drawn and bill accepted. Now, Sanket sir will visit bank and collect 900 rupees. Bank will cut 90 rupees. It's a loss. And 2 bills receivable, asset cancelled. Asset cancelled. Okay. So 900 rupees, 90 rupees is a loss. Okay. Out of this, 60 is of Sanket sir loss, 30 Mahima ka loss hai. 60 rupees Sanket sir loss, 30 rupees Mahima's loss. But discount account is debited. Mahima is not concerned for this visit, so no entry. So what is the narration? Bill discounted. Now immediately, Sanket sir will transfer some amount to Mahima. Creditor. How much amount Sanket sir will transfer? 300. But Mahima has to bear the loss of 30. And total is 330. So beta, Mahima account is cancelled. Mahima receiver. Mahima becomes receiver. 330 immediately. 330 ka loss, 330 amount is cancelled. But wait, Sanket sir will transfer only 300 rupees and discount. Now see, discount 30. Now Sanket sir is going to cancel. So to discount 30 rupees. So discount is cancelled by 30 rupees. Sanket sir will bear only 60 rupees. Na? Why 90 rupees ka loss Sanket sir will bear? Okay. So Sanket sir transferred this discount. Sanket sir transferred this discount. Instead of cancel, you can write transferred to Mahima. Mahima को discount transfer किया 30 rupees. So discount cancelled. And 300 cash transferred. Mahima will pass entry. Bank account debit. Mahima को कितना पैसा आया? बैंक में पैसा आया 300. Mahima has discount of rupees. Loss, discount loss है Mahima का 30 rupees. And to Sanket sir, he is a giver, creditor of 330 rupees. Sanket sir ने account 330 થી cancel થયું. Okay. संकेत सर का अकाउंट 330 से कैंसिल हुआ 330 से, एंड महिमा को डेबिट दिया संकेत सर ने 330 से. सो यू कैन सी महिमा डेबिट, एसएस क्रेडिट. महिमा डेबिट इन एसएस बुक्स, एसएस क्रेडिट इन महिमा's बुक्स. बड़ा बोलने को थोड़ा मुश्किल है, बट जैसे जैसे आप सिखाते जाते हो तो हमारे क्रेडिट डेबिट बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. ओके. आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा बोलने में दिक्कत आएगी, बट डोंट वरी, प्रैक्टिस मेक्स यू वेरी परफेक्ट.
सो आप लोग भी ये मेरे स्टाइल से बोल पाओगे आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट. ओके. देन ऑन ड्यू डेट पे संकेत सर विल ट्रांसफर महिमा को 660 रुपीज. नो डिस्काउंट. डिस्काउंट क्या ट्रांसफर होगा पूरा. डोंट ट्रांसफर डिस्काउंट. ऑन ड्यू डेट संकेत sir used 660 rupees, so he transferred 660. Okay, Sanket sir used 660, he transferred 660, and bank account debit. Mahima will pass entry. Bank account debit to Mahima. Mahima is a giver. Sorry, why Mahima beta? Here SS na, कुछ भी कर रहे sir. Good morning sir. Giver. Okay. So SS giver 660. SS is giver of 660. And Mahima is receiver in SS books 660. And now no entry in SS book, and Mahima will pay to bank. Mahima will pay to bank. So bills payable account debit. You can see here bills payable account debit to bank. Bills payable account debit to bank. Please revise it. Please revise it. See, very simple. All entries. Bank को 990 pay करेगी Mahima. Now you can check ultimate entry. Ultimate entry. Ultimate entry. I will show you. See, bills receivable account debit 990 is cancelled with 990. Bills receivable 990 is getting cancelled. Okay. Mahima account. Let's check it. Mahima account. Mahima 990 debit. You can check Mahima account. So if I open Mahima account in my books, Mahima by bills receivable credit किया था. By bills receivable 990. Then Mahima को डेबिट दिया 330 एंड महिमा को वापस डेबिट दिया 660 टू बैंक 330 एंड टू अगेन बैंक 660 टू बैंक एंड डिस्काउंट था ये एक्चुअली. महिमा टू बैंक टू डिस्काउंट 330 एंड टू बैंक 660. सो महिमा अकाउंट टल्ली. महिमा अकाउंट टैली. नेक्स्ट अकाउंट बैंक अकाउंट. लेट्स चेक द बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट 900 डेबिट 300 credit and 660 credit. Okay, if I open bank account debit to bills receivable 900 by Mahima 300. Sorry. By Mahima 300. And again by Mahima 660. By Mahima 660. So balancing figure 90. Credit balance is more. So to bank 90 rupees. To bank 90 rupees. Sorry. 60 rupees. Balancing figure is 60. 300 plus 660 minus 900 to bank 60. And last account discount debit 90 credit 30. So discount को debit होगा. Debit is more. So ultimate entry discount debit to bank account. So this is the ultimate entry. So I suffered a loss of 60 because I used 600 rupees and I paid 660 rupees. So loss entry is only my last entry. Discount to other accounts are getting cancelled. सभी accounts cancel हो गए. सिर्फ discount और bank बचा. सिर्फ डिस्काउंट और बैंक बचा. सिमिलरली योर होमवर्क विल बी फॉर महिमा बुक्स डिस्काउंट टू बैंक. महिमा के बुक्स में यही अल्टीमेट एंट्री आएगी. यू कैन चेक इट आफ्टरवर्ड्स. सो योर होमवर्क महिमा के बुक्स में एंट्रीज आपको चेक करना है. आई टोल्ड यू हाउ टू सी द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एसएस. तो आज का होमवर्क है. प्लीज रीवॉच दिस लास्ट 20 मिनट सेशन. बहुत सिंपल है. बिल्स रिसीवेबल टू महिमा 990. First we'll see SS entry. Then Mahima will, SS will visit bank. 900 rupees discount 90 to bills receivable. Bill is not with SS now.
So out of that, immediately transfer 330. But wait, 300 in cash and 30 discount transferred. So Mahima to the bank to discount, and then 660 on due date it is transferred. Similarly here, entry will be SS account debit to bills payable. No entry because discount का bill ये pass करेगा. Then received 300 rupees and 30 is my loss, Mahima's loss. So bank account debit 300, discount account debit 30 to SS 330. On due date pay 660 rupees and bills payable to bank is a last entry 990. So please watch it carefully. Your homework, Mahima's ultimate entries, all accounts are getting cancelled and you left with only discount account debit to bank account 30 and 60 in the Sanket sir books and Mahima ke books mein 30. It's very simple. Have patience. Try to solve this. Next session, rocking session होगा और अच्छे से करेंगे. तब तक yes, खुदा हाफिज, मिलते हैं next session में. Thank you.